maybe column and rows. This is my understanding for spreadsheet. Thank you, sir. Very good. Spreadsheet is something where you will have rows and columns, and it will consist of hundreds of thousands of cells so that you can enter the data there, and then whatever the data you have entered, you can manipulate the data into different mathematical ways. So that's a good way of understanding. So in the last class, Naveed sir taught you about like formatting and autofill. What is the meaning of autofill? Can somebody tell? Galaxy A30? ऑटोफिल का मतलब क्या है? Jassar, you can answer. Autofill means, sir, we can fill the data automatically. Actually, we can drag the data and we can fill that data automatically. Like numbers, one we can automatically fill. Yes. If at all, for example, you have a cell column called serial number, and serial number you want to type 1, 2, 3 until 100. So instead of typing manually 1, 2, 3, 4, 5, 6, you can just type 1, 2, and then you just keep and drag it. Automatically, it will autofill. So just to be safe side, I'm gonna show it to you again so that like somebody who have missed last time can understand. For example, assume that you have a serial number uh, column and then name, roll number, something like this. Assume that this is a table. So instead of typing 1, 2, 3, what you're going to do is type initial details, and then when you see this thing becoming a dark color box, let me zoom into the table. Okay, so when you see the your mouse pointer is like normal cross now, as soon as you bring this cross to the edge of the selection, it becomes black color. So that means, so it is ready to take action. Now you simply drag down, it will fill automatically number. For example, in matter of second, I can fill up number 100, 200, any number we can fill up. So this is the beauty of autofill. Autofill also, you can fill up any pattern. For example, assume that one school is giving serial number in a way, for example, ICSK, and it has the serial number like this. So you tell the Excel what is the initial two pattern, then you just select them. How to select? Just click on the first cell and then just drag down. That is called selection. So you are selecting two cells here. And then when you drag down, it keeps ICSK exactly like this, and it adds 1, 2, 3 for the number. So it is Excel is smart enough to understand that you need these many detail as a constant, and as you go down, as you move down, it will see it even did not add 10 to the number there. It add 10 and it removed the second zero from the listing. So this is the one very smart way of organizing. And also, for example, assume you want to enter a date. I say Excel class, it is happening every Sunday and every Wednesday.
So when I say Sunday, Wednesday, and if I drag, automatically it continues the it calculated how many days are in between, and then it copied accordingly. So if I say Sunday, if I drag, it takes one by one. So it's calculating how many days or difference is there, and then accordingly it's calculating. So similar, this is how auto fill works. The autofill saves a lot of your time. And one more thing, so these A, B, C, D, what you see on the screen, they are called columns. And what you see here in the left side, they are rows. So rows are always in the numbered 1, 2, 3, and columns are always numbered in A, B, C, D, and it keeps moving to a very large reference. So basically, this worksheet is a very big. You cannot imagine how big it is. You can enter as much data as possible. So my first question was like, what is the spreadsheet? So if you see at the bottom, there is something called sheet one. So this is called spreadsheet. So you can keep adding the spreadsheet here based on your requirement. For example, assume that I am maintaining a student's record here. Then I can double click that name student record. So this will become the name of the spreadsheet will become student record. This one, if I double click and say parent record of a school, if you are maintaining a school information, so you can keep adding n number of sheets out here, and you keep renaming them. And sometime what happens, just to get a quick glance of the sheet thing, you can color them as well. Like for example, if I right click, tab color, I can say, for example, student record is always red color. So whenever I can quickly go into the red color tab, which I always know that it is in the red color. Similarly, if you right click, tab color, and if I select green, so it applies green color to the other tab. So likewise, you can rename them, you can change the color of the tab, and you can rearrange them. For example, I want parents tab to come first. So I will drag and drop here. So parent record will come to the first, and then a student will come. So like this, you can play around with the spreadsheets. So these are a very handy way of organizing your data. Moving forward, any place you click in the spreadsheet, that is called active cell. So what is the meaning of active cell? Active cell means whenever you type anything in the keyboard, that cell will take the content. For example, right now I am in one place. So if I type something, for example, if I type my name, so that cell will take the action. So this is called active cell. So every active cell, every cell has a very unique way of identifying its address. For example, if I click on this cell, you need to see which column and which row it is located. For example, if you see the column C and the row, it is 5. So if you see here, this area, it says the address of this active cell is called C5. So what is the meaning of C5? It is the address
every cell has its own address here. So this shows like whenever you want in future, if you want to refer to this cell, you can check its address out here. The I'm annotating the this area. Always here it shows the address of the active cell. और हम लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा कि फॉर एग्जांपल मैं एक स्कूल का एक स्टूडेंट का मार्कशीट बना रहा हूँ, तो मैं शुरू करूँगा कि एक सीरियल नंबर में रखता हूँ और नेम एंड देन स्टूडेंट नेम, DOB डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद अगर मार्क्स वगैरह लेना, फिलहाल इसको यहाँ पे ये करते हैं. नाउ इफ यू वांट टू नेम दिस the whole sheet, you if you want to give a name, I will have a imaginary name, for example, um, excellence school Kuwait. So for example, if you see here, this the text is going beyond the cell A. So what happens is like as soon as you start typing something, if the text is more than the width of the cell, it goes beyond. Automatically, it goes beyond. So what you can do, if you want to make this table, this text only to this area, then what you can do, you can select these three columns and you can merge it. If I right click, you will be given an option. If you see the screen here, so let me annotate and show it to you. If you see this icon, so this icon says you merge more than one cell and center them. So if I click once, so what it does, it it merges the three cell and it makes the whole thing as centered. So this is how generally caption of any Excel sheet is given. Now, for example, I want to give a background color for this. So in order to give background color, it is just like how you use Word, Excel, similar way they work. I select the background color icon. I click here. So my table came. The title of my sheet is Excellent School Kuwait, and then at the bottom I will say student mark sheet. So this also, if I want to make it center with merging, I need to select all the three rows. I mean, you can say columns. Then click merge and center button. Automatically it makes it to the center. And of course, the first one is very big. The second one is little, the font and look should be little smaller than the first line. So what I'm going to do here, I have, if you see this area, here you have all the related formatting things. So I go here, I decrease the font size, and then it looks good. Similarly, I come here, I want to give like a proper look for this with border and colors. So what I'm going to do, I will select, whenever you want to select a bunch of column and rows, you just start from one place and then go until to the right side where you want to select, then come down. In this way, you will be easily selecting the whole range of the table.
So now, if you see one option here for the border and uh, thickness and all. So what I'm going to do, I want to give border to all the cells. So all border, if I select, it gives you a very thin table thing. So again, I will go here. I will select line style to a little bigger. And then again, if you select like this, it will give one overall thick border to the table. Similarly, and I want to give heading a different color. So what I'm going to do, I will select these things, only the headers, and then I will select some dark colors. So when you put the dark color here, so what happens? The text also, since it is a dark color, it is not visible. So what I'm going to do, I will select again. I will change the color of the text to like this. So now it is somehow looking nice. Similarly, I can give a different color to the second headline, and I will make this as bold. Student 1, 2, serial number, I will drag it here. I will select them. I will drag them. So till serial number 7, automatically it corrected. So now I want to see, if you see the serial number column, it's very big. I don't want to have such a big column. So I want to make it as I want to change the width of the column. So how do you change the width of the column? So go here, and if you see, every column has the edges. So when you hover your mouse over here, automatically it shows one arrow. So I will click, I will drag here, and then automatically the serial number 1 became the small. And name, since names sometime are big, what I can do, I can keep the name as little bigger. Date of birth like this. So this way, you can format and you can make the whole table look beautiful in the sheet. And also 1, 2, 3, I want to make them center align so that I can easily see them. So if I click alignment button, it automatically became center. So now I can start entering date of birth. I will enter, for example, 9 3 1978, 12 3 1977, 12 11 2000. Sir, Yes, sir, sorry to disturb you. yes. Some of our participants requesting to use Hindi also. Okay, okay, sure. I always forget. Thanks for reminding. तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का जो कॉलम है, उसके लिए भी हम लोग डेटा एंटर करेंगे। मैं यहाँ पे ये जो अब फिलहाल जो मैं सेशन ले रहा हूँ, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरे टेबल को कैसा कंट्रोल किया जाए, रो हाइट, कॉलम हाइट, उसको सेंटर अलाइन कैसा किया जाए। जब ये जो है बेसिक जो चीज़ों में आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे,
तो आगे जाके फॉर्मूलास और ये डालने में आसानी होगी आपको। 2001 4 1999। Okay, so now I entered this much of what do you call date of birth information. अब मुझे ये जो फॉर्मेटिंग ये जैसा दिखा रहा है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। आई वॉन्ट टू फॉर्मेट इट इन माई ओन वे। सो व्हाट आई कैन डू, देर इज, यहाँ पे अगर आप ये देखें, एक जगह सेल का जो है स्टाइल फॉर्मेट यहाँ पे ये दिखाता है। ये बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पे देखिए, ऑटोमेटिकली जब आपने डेट डाला तो उसको पता चल गया कि आपने डेट डाला, तो उसको डेट फॉर्मेट में इसने सेलेक्ट किया। लेकिन डेट में भी जो है मुझे मुख्तलिफ स्टाइल में चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें डेट का जो ये है, फॉर एग्जांपल आई वांट डे मंथ लाइक दिस। मैं ओके बोलता हूँ एंड इफ आई move the mouse cursor, see how it added the style. Automatically, it calculated which day and which month of the year. अगर इसको आप सेम दूसरे जगह भी आप इसको ये करना चाहते हैं, तो यू कैन इजीली टेक दिस स्टाइल टू अदर कॉलम्स बाय जस्ट कॉपीइंग इट विद द हेल्प ऑफ पेंटर। ये जो है फॉर्मेट पेंटर है, जो यहाँ पे यूजुअली रहता है। ये देखिए, मैंने मार्क करके दिखा रहा हूँ। वहां पे अगर आप देखें तो एक छोटा सा ब्रश के जैसा रहेगा। वो ब्रश का काम क्या है? वो ब्रश आपको जो जहां जो सेल में आप हैं वो सेल का स्टाइल लेके दूसरे सेल में भी वो ऑटोमेटिकली डालेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको दिखाया कि ये सेल जो करंट जो मैं सेल में हूँ उसका जो फॉर्मेटिंग है डेट ऑफ बर्थ का, वो डे मंथ एंड देन ईयर दिखा रहा है। ये अगर मैं चाहता हूं कि ये सब दूसरे सेल में भी सेम स्टाइल आ जाए, तो मुझे क्या करना है? जस्ट गो हियर, जस्ट गो टू दिस आइकॉन। लेट मी टेक दिस आइकॉन। ये आइकॉन लेके मेक श्योर दैट यू आर इन द ओरिजिनल सेल, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप आउट हियर लाइक दिस। तो आपको ऑटोमेटिकली देखिए कि कोई सैटरडे पैदा हुआ है, कोई संडे, कोई वेडनेसडे, तो वो ऑटोमेटिकली वो ले रहा है। एंड नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग विच ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर, जब भी कोई सेल ऐसा दिखाता है, यू विल एनकाउंटर दिस प्रॉब्लम मेनी टाइम। जब भी ये नंबर दिखाता है, उसका मतलब ये बोलने के लिए कोशिश कर रहा है कि इसका जो विड्थ है, इट इज नॉट सफिशिएंट टू फिल द डेटा। तो दैट टाइम व्हाट यू नीड टू डू, you just go to the column, just drag and make it enough space for to fill up, because it was Thursday, November 11, 1999. That's why the day, location was not enough. So this is how you um, do like formatting and basic auto filling, and this formatting of the particular thing is very very important. अफजल निजामी सवाल कर रहे हैं। let us take one question and then we will move. जी, Assalamualaikum, sir. वेलकम सलाम। Sir, I'm just wanted to ask you, sir, if there is a n number of sheets, so and we want to go to a specific a sheet, like I'm just looking for a student record, and I don't know where is that sheet, and there is a n number of sheets. So how we look that particular sheet? Is there any search bar to go to that specific sheet where we have the यहाँ का n? जो नीचे जो शीट है उसकी बात कर रहे हैं आप?
यस सर, जो नीचे शीट है, लाइक हमारे पास n नंबर ऑफ शीट्स हैं, हाँ और हमने सब सीट्स को नाम दे रखा है, स्टूडेंट रिकॉर्ड, पेरेंट रिकॉर्ड, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सो ऑन। हमको हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ सीट्स हैं, तो हमको हमको जाना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की शीट पे जाना है। तो हमें पता नहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की शीट कहाँ है, तो हम वन बाय वन देखने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हाउ कैन वी फाइंड दैट पर्टिकुलर शीट इन जस्ट वन गो? सी बेसिकली कोई भी एक एक्सेल बुक में है ना, आप जी। थाउजेंड्स ऑफ शीट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं रखेंगे, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ एक्सेल मेंटेन इज कि आप हर चीज का एक वर्क एक्सेल फाइल बनाएंगे, एंड यू ट्राई टू मिनिमाइज लाइक कीपिंग ऑल द डेटा इन वन एक्सेल थिंग। अगर आप समझिए कि यू आर गिविंग एग्जांपल लाइक 1000 अगर वर्कशीट एक से इसमें रहता है, वैसा चांस बहुत कम रह, प्रैक्टिकल लाइफ में जो है 1000 रिकॉर्ड्स रहता है, लेकिन 1000 वर्कशीट एक ही बुक में आप कभी नहीं रखते। सर उसमें उसका फॉर एग्जांपल मैं एक सर्विस मेरी एक सर्विस कंपनी है, एंड मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज देता हूँ, लाइक 20 एंड 30 टाइप्स ऑफ सर्विसेज। I want to maintain record of those services into one Excel sheet with different sheet. मतलब like sir, in those sheets I want to maintain in the same Excel. हाँ देखिए, So this 15-20 अगर शीट हैं तो हियर लाइक जस्ट मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसको मैं समझता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कंट्रोल एफ मार रहा ये हूँ। अ, and देखिए ऊपर शीट है, यहाँ पे फाइंड वर्कबुक, ये एक ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं अनोटेट करता हूँ। so can you do once again sir? यहाँ देखिए, कैन यू सी दिस कॉर्नर? Yes, यहाँ पे जो है मैं अगर टाइप करता हूँ सर्च parents record. पेरेंट, तो इसको मैं आई वांट टू सर्च इन द वर्कबुक, तो उसको ये कर देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन नॉट फाइंड डेटा यू आर सर्चिंग फॉर, फाइंड इन वर्कबुक, फाइंड इन शिप। हाँ, फाइंड इन वर्कबुक का मतलब ये है कि पेरेंट करके वर्ड जितने भी वर्कबुक में है वो निकाल के दिखाएगा। अगर एक ही शीट में चाहिए तो एक शीट में दिखाएगा, लेकिन ये बुक का नाम किधर है वो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये जो मैनुअली करना पड़ेगा सर। ऑप्शन आपको नहीं रहेगा। ओके सर। रिप्लेस, क्योंकि यूजुअली वो ऑप्शन आने का चांस तो नहीं रहता है। हो सका सर, हम मूव करके हम देख सकते हैं सर। आई जस्ट हाँ हाँ, क्योंकि वर्कशीट है ना, बेसिकली द क्या बोलते हैं वो, गुड प्रैक्टिस इज नॉट टू कीप टू मेनी वर्कशीट इन वन एक्सेल शीट। तो उससे क्या होता है, आपको कॉम्प्लेक्स डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है, फाइल अगर कुछ करप्ट करप्ट हो जाती है तो यू विल लूज ऑल द डेटा। तो जस्ट टू मेंटेन दैट लाइक यू आर सेफ, पर्टिकुलर सेल्स का एक वो बना देंगे आप, प्रोडक्ट के जो डिटेल्स हैं वो एक अलग इसमें रखेंगे। Like this, you can do it. Okay, so now I want to see how well you understood this. यहाँ पे मैंने आपको कॉलम का साइज कैसा बढ़ाना छोटा करना है वो दिखाया है, कॉलम का टाइटल देके उसको मर्ज करके सेंटर में कैसे दिखाना है वो दिखा रहा है, और डेटा कोई भी एक फॉर्मेटिंग, डेट ऑफ बर्थ का अगर यहाँ पे दिखाना है मुझे, तो एक पर्टिकुलर वे में डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिखा के उसको सेट कैसे करना है मैंने दिखाया। ये क्विक 5 मिनट में देता हूं आपको, इसको आपके एक्सेल शीट में करके आप फोटो लेके डालेंगे, ताकि हम लोग आगे और आज दूसरे सब्जेक्ट में भी हम लोग बढ़ेंगे। आई विल गिव यू 5 मिनट्स नाउ, प्लीज डू एग्जैक्टली, मैं बोल रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली ऐसा दिखना चाहिए। आई वॉन्ट टू सी हाउ वेल यू पिकअप
the formatting of the thing. मुझे चाहिए कि आप टॉप ग्रीन कलर ही दे, जो स्टूडेंट मार्कशीट का जो ये है उसको येलो ही दे, और डार्क ग्रीन जो है उसको हेडर को दे, और आई आल्सो वांट यू टू गिव ए थिक बॉर्डर ऑफ द टेबल. इतना सारा करिए क्विकली. There is one more question, Dr. Rifat. You can ask question, sister. Assalamu alaikum. Can you please Salam. repeat this date of birth format, how you changed just that, the last one? Okay, Yeah, thank you. you're welcome. For example, earlier, if it is, I will show you short date. समझिए कि इससे पहले ऐसा था ये. मैंने जो डेटा एंट्री की वो ऐसा ही किया था. पहले मंथ डाला, उसके बाद डे डाला, उसके बाद ईयर डाला. तो सम टाइम आवर नीड रिक्वायर्स टू प्रेजेंट ए डेट इन अ वेरी पर्टिकुलर वे. बाकी के लोग, जिन लोगों को पता चल गया है, वो करके आप क्विकली डालिए व्हाट्सएप ग्रुप में. बोथ सिस्टर्स आल्सो प्लीज पुट इट, विल सी हाउ वेल यू गॉट इट. तो इसको अगर मैं आई वांट टू शो दिस डेटा इन अ वेरी पर्टिकुलर स्टाइल, तो आप मैं क्या करूँगा, यू जस्ट ऑब्जर्व द अनोटेशन व्हाट आई एम गोना अनोटेटिंग. आप यहाँ पे देखेंगे Okay. ये डेट करके जो ऑटोमेटिक वो पिकअप किया है, यहाँ पे जाएंगे, ये मोर नंबर फॉर्मेट करके एक ऑप्शन है सबसे नीचे. नजर आ रहा है? Yes, yes. ओके, आई विल गो हियर. इट Okay. गिव्स यू ऑप्शन. ये विंडो नजर आ रहा है आपको अब जो Yeah, पॉप yeah. अप? ओके, Yes. सो इफ यू गो टू डेट, इट विल गिव यू एग्जांपल्स हियर. Yeah. डे आएगा, उसके बाद समटाइम सम कंपनीज दे आस्क यू टू एंटर द ईयर फर्स्ट. अगर Yeah. ये सेलेक्ट करूंगा तो ईयर वो सामने डालेगा. यहाँ पे वेडनेसडे, द मंथ एंड द ईयर आ रहा है. तो इसको मैं ओके करता हूँ, तो दैट मीन्स इट विल अप्लाई इट टू ओनली वन सेल. मुझे Okay. इसको, ये स्टाइल को सब जगह कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँ, आई विल टेक द हेल्प ऑफ फॉर्मेट पेंटर. ये फॉर्मेट पेंटर किधर रहता है? ये जो छोटा वाला एक ब्रश यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, वो Yes. बहुत काम की चीज है वो. इसको मैं क्या करूँगा, मेक श्योर यू आर ऑन द एक्टिव सेल. वो जो थर्सडे करके जो नया बना है, वहां पे आप हैं. उसके बाद ये फॉर्मेट सेल के ऊपर क्लिक करके बाकी के भी मैं आपको क्लिक कर दूं, तो ऑटोमेटिकली इट विल अप्लाई. So now tell me, Sister Rifat, why it is showing number format here? Yeah, you said no, the width will be like less, so I have to increase the width, then it will come. Very good, mashallah. So Yeah. if I Thank you. Now increase it's the clear width, for. automatically it will. Now Yeah, do it thanks. exactly like same. I Yeah, want yeah. to see how well you all picked it up. Thank you. Shivagami Kumar, very nice. Just make sure you did not take a screenshot of my table and you posted. If it is no, then mashallah, you have done a very good job. You have done exactly like how I have shown. Mashallah, good. Very good, Shivagam Kumar. Sisters, let me see. Sister Fatimun has done a good job. Very good. Qazi Saad, you did not give border to your table. Or maybe it is a very thin border. Okay, no issues.
Anita Handa, very good job. Muzammil Ahmad, okay. But sir, it is advised you to sit along with the PCA, then only you will learn. Otherwise, just watching the class will not be very helpful. इरफान खुर्शीद, वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा आपने बनाया है अलाइनमेंट. Zishan Khan is asking the question. Yes, Zishan Khan, you want to ask Yes, sir, something? I am asking where is this option of format painter and how Format. we will use it? Okay, I will show it to you again. Okay. Focus with me. For example, assume I created this format by going to this date thing. The format painter, it exactly it is here. Can you see where I'm doing the annotation? Red color. Yeah. Okay, fine. Yeah, this is a small format painter, but it is very helpful. Now how it will use? Yeah, if I select here, you just see in focus with me. You start from second cell and go down and release it. You need to release start from the number one and go to the last cell and release your mouse button. Automatically, it creates like this. Okay, fine, sir. I will show you Thank you again. so much. You put the mouse pointer, the current cell, take this and start from here and release it, release your mouse button here. So automatically it gives the same look. Okay, sir, fine. Thank you. Interestingly, see, for example, if I give the background color of this as blue color, text color, assume text color also blue. If I take this thing, even the color also it copies. So Become the same. anything it is there in the cell, it copies as it is. Okay, fine, sir. Okay, so we will continue. Date, I will make it as a short date for now. This is only to I will select short date and I will decrease the okay, and also I will make it color as black color. Okay, let's move forward. Now we will assume that this is also the mark sheet of the when we have named the table as mark sheet, so that means when we should have the
mass as well. So I will now we will try to know some of the basic formula functions, how it works. Before that, I will show you one more useful feature what we have in the Excel, that is the sorting. If you see this area, there is something where you get A and Z. So what it shows, it is mean you can sort, you can arrange the text in a very systematic order. How can I arrange? Sir, for example, let me delete the annotation. I want to arrange these table according to the names, the alphabetic names of the student. So I will go here, sort. I will say custom sort. Okay. If I say custom sort, it will ask you sort by what? Sort by, I will select eight. I will sort by, the sort on the value is the value, and it should be from A to Z. And if you want to see colors, you can give the color. I will say I will select this table. Custom sort by name. The sort by, I will select according to name, it should sort the value A to Z. If I say okay, you see Ahmad came first, Kamal came second, Raj came as third, and Yusuf, because he is Y, he went down. So you're arranging, and accordingly the birth dates also automatically be, it will be arranged likewise. So this is one of the useful way of arranging your content according to the order. Now, if my requirement is arranging the order by the birth date, the birth date of the student. So I will go again here, custom sort. I will say select by date of birth, sort by date of birth, value, oldest to newest. I mean, the oldest person should come at the top. So I say okay, जो बंदा 1977 में जो पैदा हुआ है उसका रो पहले आ जाएगा, और 2001 में जो बंदा है वो लास्ट में आएगा. So you're arranging the data according to a specific need of your thing. सीरियल नंबर यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया है, नथिंग टू वरी. एक दो ये टाइप करिए, उसके बाद यू सेलेक्ट एंड ड्रैग अगेन. It will be within a fraction of second, you can rearrange them in an order. So now I have arranged my data according to the age of the student. The old senior student is coming first, and then the junior at the last. Mehboob Alam. Anis Fatima, you have anything related to this, you can ask. Let's focus on what we are learning. Yeah, same thing. Actually, when you showed, the day was coming, right? When I clicked that option, I'm not getting. Only I shared already in the group what I got. Okay, let me see. Ladies group में आपने डाला है. Arav, Sana, that list, students list. In that I got Okay. date. The first one you can see 06 June. It is written. Which day I did not get the option.
ओके आपका जो लेडीज स्विंग एक्सेल फीमेल एक्सेल ग्रुप में आपका नाम सना करके दिखा रहा है क्या? No. Mine is Can actually you pin Anish it again? Fatima. Just now I will send 1 minute. Okay, put it again. Let me see what you're getting. Yeah, send now. Okay, you're in gents group. Okay, so now date of birth 6 June. You ये got आपने date. हाँ आपने मैनुअल डाला या वो ऑटोमेटिक आया? No, I selected that. Okay, so see, I will show you again one more time. यहाँ पे आपको क्या करना है? You focus with me. You need to go here, this area, जहाँ पे वो फॉर्मेटिंग है. यहाँ पे मैं Yes. जाऊंगा. You go to the more number format करके Yeah, सबसे there only I नीचे. clicked. Yes. Yeah. Now, Same. if you see ये जो वेडनेसडे करके जो दिखा रहा है, उसको आप सेलेक्ट करिए. Yeah, that I'm not getting in that. That's what I'm saying. हाँ, I this got only that number and then month in words and year. you should get it. Maybe your version may be different or something. Usually you should get like this. So Which when I version click you are that, using? I'm not sure about this which version, but it is the latest one only. 1 year back I bought laptop. Okay, That time what only. you are getting, उसका भी फोटो लेके डालिए. We will take Okay, it. We will okay, discuss it okay, okay, later. okay. We will continue here. So I was Okay, talking thank you. about. Okay, we were talking about arranging the thing according to the date and birth. So that was filter. Okay, so now assume I will start entering the scores of the students. Maths, science. Okay, we have five subjects, and I will enter randomly some number. Okay, we have decent amount of data here. Okay, so now if I want to decrease, I want to see. Okay, now this is my actual table. Okay, so I will put the borders also for them so that they look within the same range. And also, technically, these things should come until here. It should be within the center. So how can I increase this? You select all this and then again do the same thing. Automatically, that also will be added to the here. So the whole thing, the student mark sheet became one table now. Imad is asking some question. Imad, yes. Assalamu alaikum, Jafar uncle. Welcome, salam. I wanted to ask about this one, the Saturday 12 March 1977, that format.
Mm-hmm. I know how to get that format, but I want to apply it to the whole column of DOB at Okay. once. How Mm-hmm. do I do that? सी फोकस विद मी आई सबसे पहले तो उसके ऊपर जाके क्लिक करके उसके बाद ये जो आइकन है फॉर्मेट पेंटर है वो उसको लेके एट वंस इफ यू ड्रैग एंड ड्रॉप ऑटोमेटिकली इसको लेके अगर ऐसा करेंगे तो ये सब लोग वैसा ही बन जाएंगे यू जस्ट नीड टू इंक्रीज सी सो दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग इमाज Yeah, I got it इमाज now. ओके सो लेट्स कंटिन्यू सो मैंने एक रफ यहाँ पे एक मैथ ये डाल दिया है नाउ इफ आई वांट टू अरेंज द डेटा अकॉर्डिंग टू फॉर एग्जांपल मैथ्स में सबसे ज्यादा जो मार्क्स लेके रहते हैं उनका लिस्ट ऊपर आ जाए तो व्हाट आई हैव टू डू select you need to select the whole table आपको एक्सेलेंस स्कूल मार्कशीट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द टेबल द पार्ट ऑफ द टेबल इज द कॉलम हेडर उसके बाद द कंटेंट सबको सेलेक्ट करेंगे आप सेलेक्ट करने का तरीकाकार क्या है आई स्टार्ट फ्रॉम सीरियल नंबर ये जो पहला रहता है वहां से लेके लास्ट सेल तक मुझे ड्रैग करना है सी यू क्लिक द माउस एंड कम हियर until the last cell automatically it will be selected so now what I'm gonna do again let me annotate यहाँ पे जो sort का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे let me remove it ओके यहाँ पे सॉर्ट का जो ऑप्शन वन ए एंड जी करके जो दिखाता है उसका जो मतलब ये है कि वो सॉर्टिंग दिखा रहा है सो आई विल गो हियर ऑलवेज सेलेक्ट कस्टम सॉर्ट मैं मुझे सॉर्टिंग जो है सॉर्ट बाय इंस्टेड ऑफ डेट ऑफ बर्थ आई वांट टू सॉर्ट अकॉर्डिंग टू द मैथ्स मैथ्स में जो मार्क्स मिला है उसमें मुझे स्मॉलेस्ट नाइन आई वांट लार्जेस्ट फर्स्ट एंड देन टू द स्मॉलेस्ट ये मैंने सेलेक्ट कर दिया click OK. See, Kamal Khan has scored 45 in maths, so that's why he is on the top column. And एक बेचारा अहमद जो है 2 मार्क्स लिया है मैथ्स में तो वो लास्ट हो गया. So this is the way you arrange the text in this way. Now quickly do this exercise. क्योंकि हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही दम बता देंगे तो आप यू विल नॉट बी एबल टू डू इट properly. Now do exactly how I showed you. Arrange it according to the maths number and put it in the group. You have only 2 minutes now. Not all the students are putting. I request everyone to participate. That's how we see how well you are learning. Otherwise, there is no fun. Very good, mashallah. 45, 44. Okay, that's good. Very nice.
नहीं, Asif, this is not okay because you have arranged to the smallest to biggest. You need to do it reverse. सबसे ज्यादा जो मार्क्स लिए हैं वो ऊपर आना चाहिए। तो आप जब सेलेक्ट करते हैं तो आप सही सेलेक्ट करिए ऑप्शन, तो वो आ जाएगा। Shabbir Ahmad, yes, you have done a good job. Very good. Many sisters are doing good job. Umar Farooq, you have done a great job. Asif also. Sister Ansi also, great job. Sister Avni, 45, 40. No, this is wrong. Look, Sister Avni, your math 60. Okay. You put the maths at the third column, so I got confused. Okay, so I think now this is good information so far. So let me again go. Let's try to now we will start a new and very important subject, that is formulas and functions. So so far all this time we have done like enough like basic formatting and playing around with the table, cell, giving border, all the stuff. So now we are prepared well enough to move on to the actual core thing of Excel, that is like calculating formula with the formula and all. I see a lot of hands raised. Dr. Fatima, you can unmute. हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज फातिमा Okay, हियर। एक छोटा welcome. सा डाउट है। जी, ये जो हम कस्टम शॉर्ट करते हैं ना, लाइक फॉर मैथ्स, साइंस, हिंदी, लाइक दैट, पूरा कैसे, वो एक स्टेप दिखाना सर। अच्छा, और ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, फोकस करिए मेरे साथ। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ओके, नाउ यू कैन सी एवरीथिंग। नाउ जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग इट टू सिस्टर फातिमा, आई विल सेलेक्ट साइंस। साइंस में जो मार्क्स रहता है उसके हिसाब से मैं अरेंज करना चाहता हूँ। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यू सेलेक्ट द होल टेबल लाइक दिस। When you're selecting, you're telling the Excel that you want to play with only this much text, this much data. Now I will go to ये जो AZ करके एक जो बटन है, आपको नजर आ रहा है सिस्टर फातिमा? यहाँ पे मैं अनोटेट करके भी दिखा देता हूँ। ये जो है ये यहाँ पे एक AZ करके एक A to Z करके एक बटन है, वहां पे आपको जाना पड़ेगा, कस्टम सॉर्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकम्स ट्रिकी हियर। सी, सॉर्ट बाय किससे सॉर्ट करना चाह रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। इट विल शो ऑल योर कॉलम्स, आपके टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं हेडर वो दिखाएगा। नाउ सिंस आई हैव सेलेक्टेड साइंस एज द एग्जाम्पल टू शो, आई विल सेलेक्ट साइंस। वैल्यू जो है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, मुझे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए। उसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा जो मार्क्स लेके रहता है वो पहला आएगा, उसके बाद लास्ट जो है सबसे कम जो मार्क्स लिया बंदा है वो आएगा। नाउ इफ आई से ओके, आप देखिए कि साइंस में जो बंदा 56 लिया है वो कमाल खान है। So this is very simple. Did you get it, Dr. Fatima? सर सॉरी टू डिस्टर्ब। हाँ, Hmm. आपने जैसे बोला, हमने पूरा सेल जैसे सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद जब हम कस्टम सॉर्ट में व्हेन वी वेंट
व्हाट इट हैपेंस, आपको आ रहा है ना सर, जैसे द सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैक्स, वो हमें नहीं आ रहा है नीचे। नहीं, देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये सेलेक्ट करने के बाद हाँ आप सिर्फ सीरियल नंबर से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करना है। डोंट सेलेक्ट एक्सेल, वो ऊपर का जो हेडिंग है वो सब मत सेलेक्ट करिए। और जब यहाँ पे आते हैं कस्टम को, यहाँ पे ये सॉर्ट के सामने वाला जो बटन है उसको क्लिक करना है, सॉर्ट बाय, ये बटन आप सर, देखिए, मुझे तो आपको वो आना चाहिए। सॉर्ट बाय कुछ नहीं आ रहा है, हमें एम्प्टी आ रहा है सर, नीचे नीचे जो अच्छा। ग्रीन लाइन है हमें नहीं आ रही है। हाँ, एम्प्टी आ रही है। हाँ उसको देखना पड़ेगा कि आपने कुछ गलत किया है, कुछ तो हुआ अच्छा, होगा। मुझे लगता है वो जो माई डेटा हैज हेडर कुछ, वो जो आपका जो बॉक्स क्लिक हुआ है ना, मे हाँ, बी हमें क्लिक नहीं हुआ है। ओके, आप एक काम करिए, ओके। यहाँ पे एक जगह कहीं तो इसको हम राइट क्लिक करके डिफाइन नेम, इसको भी नहीं, डिफाइन नेम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यूजुअली इसको आना चाहिए। फॉर्मेट सेल, डिफाइन नेम, सर्विसेज। आप एक काम करिए, एक नया शीट में जीरो से शुरू करिए, और नाम वगैरह सेम वो डालिए, आना चाहिए। मे बी सम मिस्टेक हैपन, एक और बार ट्राई करिए। अंटिल देन आई विल शो देम लाइक अनदर कॉन्सेप्ट, ठीक है? Okay, so now we have this much of records. Now I want to find a Hello. total of each student's marks. So that's where generally we talk about the functions and formulas. So मैं इसका total करके मैं heading डाल देता हूँ, और उसके बाद अब यहाँ पे if I want to add these many things, first we have to remember one very important thing. ये जो फॉर्मूलाज जब भी डालना पड़ता है आपको एक्सेल में, फोकस विथ मी एवरीबॉडी, बिकॉज दिस इज द क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ द एक्सेल क्लास। यहाँ पे अगर आप ज्यादा फोकस नहीं करेंगे तो आगे जाके काफी ये होगा, कंफ्यूजन होगा। तो जब भी आपको फार्मूला डालना है, तो फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विथ इक्वल टू साइन। आपको जब आप इक्वल टू साइन डाल के जब भी टाइप करेंगे, तो आपको वो फार्मूला करके वो ट्रीट करेगा। नाउ फार्मूला में जब भी आपको कोई ऐड डिलीट वगैरह करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो जो हम लोग मैथ्स में जो ऑपरेटर यूज करते हैं, वही ऑपरेटर यहाँ भी इस्तेमाल होता है। प्लस एडिशन करना है तो प्लस आएगा, माइनस जो है वो सब्सट्रैक्शन के लिए आएगा, ऐसा ही है। तो नाउ इफ आई वांट टू ऐड द मैथ्स स्कोर ऑफ कमाल खान, तो मुझे क्या करना है, फोकस विथ मी, ये जो मैथ्स का कमाल खान का जो मैथ्स का स्कोर है, अगर उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, तो ये सेल का जो एड्रेस है, ये देखिए, कोई बता सकता है कि ये सेल का एड्रेस क्या है एंड हाउ टू पिक अप द एड्रेस? रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट। आसिफ? D4 सर। D4? आपने D4 करके कैसे कहा? व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक डी कॉलम में और हाँ, रो जो है 4 है। वो ये देखिए, मैं एक बार, जो नए लोग रहते हैं उनको मैं आसानी के लिए, सर मेरे को एक क्वेश्चन था। एक सेकेंड, ये कॉलम देखिए ये है, और अगर इसको मैं ऐसे कंटिन्यू करूं, देखो 4 तक जाएगा वो। तो ये इसका कॉलम का नंबर क्या देखिए, 4 है, और ये कॉलम का नाम जो है डी है, और रो का नाम जो ये है, ये 4 है। आसानी के लिए आप अगर
यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी जो है D4 करके दिखा रहा है. So whichever cell you click, it will be it will show the address of that particular thing. Now ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इससे भी आसान तरीका है, लेकिन it is always good to learn hard ways. So now if I want to add math, science, हिंदी, English, history, मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो I have to start with plus, equal to sign to begin my formula. मैं फॉर्मूला मेरा क्या रहेगा? D4. मैं D4 करके मैं बोल रहा हूं, दैट मीन्स इट इज दिस सेल. ऑटोमेटिकली वो हाईलाइट हो गया. साइंस का जो रहेगा, कॉलम तो सेम है, सिर्फ रो सेम रहेगा, कॉलम चेंज होता जाएगा. इसका एक और तरीकाकार भी है. नाउ D4 में प्लस का जो साइन है, अगर आप मैक में हैं तो मैक और विंडोज दोनों में शिफ्ट पकड़ के अगर वो की मारते हैं तो प्लस आएगा. आप साइंस को क्लिक करें, E4 आ जाएगा, और हिंदी को क्लिक करें, F4 आ जाएगा, प्लस इंग्लिश को क्लिक करें. तो अब आपका फार्मूला देखिए, इक्वल टू साइन मैंने शुरू किया, D4, E4, F4, G4, because you're calculating you're adding the content what is there inside these cells. ठीक है? There is one more history के लिए, H4. Now if I press enter, आपको देखिए टोटल यहाँ पे आ गया. So this is वेरी ट्रिकी. मैं एक और बार आपको दिखाऊंगा. आप फार्मूला शुरू करिए प्लस साइन से, उसके बाद आप मैथ्स और प्लस करिए, साइंस प्लस करिए, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस हिस्ट्री. इसको सब करने के बाद लास्ट में प्लस डालने की जरूरत नहीं है, H4 के बाद प्लस की जरूरत नहीं है. And you have to remember now, when you finish your formula, कीबोर्ड का एंटर दबाना जरूरी है. If you by mistakenly, if you press this mouse button somewhere else, it will take something else. So without clicking the mouse button outside, just press enter from the keyboard. Automatically इसने total कर दिया. Now remember we told you about the auto sum, the auto fill. इसका भी जो है, आप ये कॉर्नर में जाके, लेट मी जूम इन टू द रोज. अगर ये टोटल का जो सेल है, इसके कॉर्नर में जाके अगर आप इसको खींच के यहाँ पे छोड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक्सेल इज स्मार्ट एनफ टू डू द कैलकुलेशन अक्रॉस ऑल द स्टूडेंट्स. ये खुद वो कैलकुलेट करके आपको दिखा देता है. So this is how a simple addition can be done with the help of formula. So I know for some new people it's going to be little confusing के इसको address कैसा दिया जाए. यहाँ पे जो है, आप एक और बार दिखाता हूँ मैं. Always formula starts with equal to sign. उसके बाद if you are not comfortable with व्हाट यू कॉल, जो सेल एड्रेस आपको समझ में नहीं जा रहा है, तो आप क्या करिए, मैं आपको एक आसान तरीका दिखाता हूँ. इक्वल टू साइन, एंड वेन एवर यू क्लिक दैट पर्टिकुलर सेल, एक बार क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वो खुद ले लेगा. अगर माउस पॉइंटर से क्लिक करेंगे तो वो ले लेगा. उसके बाद प्लस आपको दबाना है. प्लस जो टेक्स्ट है वो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है. साइंस अगेन प्लस, हिंदी अगेन प्लस, इंग्लिश अगेन प्लस, हिस्ट्री अगेन प्लस. उसके बाद प्रेस एंटर, टोटल आ गया.
ठीक है. So now let's take question. I'm sure many people will be having question. Try from your side in the computer and then ask me the question. Okay, I'm giving you another 2 minutes. Sure, boy, when time is up for today's class, you tell me, huh? I think more 15 minutes will go ahead. ओके सो लेट्स सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ये टोटल करके फोटो लेके मुझे डालिए वहां पे. जिन लोगों को ये समझ में नहीं गया है वो हाथ उठाएंगे तो मैं वन बाय वन आई विल टेक इट. जैनब, सिस्टर जैनब, यू कैन आस्क. Nothing, sir. That time you asked the cell address. That time I had raised hand. Okay, you can remove your hands up. Yeah, sure. Thank you. सिस्टर शहनाज फातिमा. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम सलाम. जफर भाई, ये एडिशन का एक इजी मेथड है ना? हाँ हाँ हाँ, इक्वल करके आप पहले भी मैं बता दिया कि समटाइम इट इज गुड टू लर्न सम बेसिक थिंग्स. उसके बाद ओके. इजी मेथड मैं बाद में बताता हूँ. जी जी जी, ओके, जैसा. सिस्टर आबिदा. Hello. I wanted to know the total what we got. That same can be done, or we can just drag it down. That same formula will be applicable for the rest Yes. of the shells. Yes, yes, that is the beauty of giving this formula. You just drag down. लेकिन dragging में जो है you should be careful. I will show you two method of dragging. You see in the screen, if you check the screen, अगर इसको ऐसे नीचे पकड़ के अगर इसको ड्रैग करेंगे तो वो खुद आ जाएगा. अगर if you want to copy the formula, then you should go Corner. to the rightmost corner. ये नजर आ रहा है आपको? जी 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 जी. ये यहाँ पे जाके अगर खींचेंगे तो वो सिर्फ फॉर्मूला कॉपी करेगा. Perfect. Perfect. This is the fun. Very good. Thank you so much. ब्रदर एम अली. हेलो सर. यस सर मेरे को क्वेश्चन ये था कि आप सुन रहे हो सर? हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलिए अली भाई. नहीं जी, सर, मैं वो आपसे बोल दूसरे रहा हूँ हैं. सर. आप ओके, आप कर लीजिए. सर क्वेश्चन ये था कि कस्टम सॉर्ट पे जो जाना था, जैसे मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सही है, तो एक साथ सबका मैक्सिमम नहीं देख सकते हैं? सब लोगों का मैक्सिमम. हाँ, सबका एक साथ, क्योंकि इसमें बस पार्टिकुलर मैथ का ही शो कर रहा है. अगर हाँ हमें नहीं, अब कस्टम देखिए इसमें गड़बड़ क्या होगा. कोई एक बंदा मैथ्स में ज्यादा लेके रहता है, साइंस में कम लेके रहता है, तो उसको आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि टोटल को अगर लेके आप उसको अरेंज करें तो उसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा जो जो सब्जेक्ट में लिया है बंदा वही ऊपर आएगा. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वो आगे क्लासेस में आएगा इंशाल्लाह. ओके सर, थैंक यू. हाँ सर. और कौन नहीं, है? वो यास्मीन, यास्मीन रशीद, जसर रुमानी. यस सर. मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ. ऑप्शन है वो कस्टमाइज से, अगर हम लोग डायरेक्ट फिल्टर उसमें ऐड करेंगे तो, क्योंकि कस्टमाइज थोड़ा वो लेंदी लग रहा है डायरेक्ट. हाँ मैंने फिल्टर ऑप्शन मैंने अभी फिल्टर दिखाया ऑप्शन नहीं, अभी. मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह. हेलो. हेलो. जसर भाई, आपका सवाल मैंने समझ में गया. मैं फिल्टर जो ऑप्शन कैसा काम कर, आई शोड ओनली द नहीं नहीं सॉर्टिंग. सर, वो जासिर अलग थे, आपने एम अली बोला था, मेरे जगह पे उन्होंने रिप्लाई किया है. एक्चुअली अच्छा. हमारा एक क्वेश्चन था कि हाँ. हमने जो टोटल का जो फॉर्मूला लगाया ना सर, हम्म. उसमें कभी कभी ऐसा होता है ना कि लेफ्ट कॉर्नर में कुछ एकदम छोटा सा एक ग्रीन वो सेल के ऊपर में एक ग्रीन ऐसा कुछ ऐसा आता है सर. मैंने हाँ हाँ. आपको फोटो भेजा है और उसमें ओके भी ये चीज आया है. तो वो ओके, मैं क्यों देख. आता है सर? वो नहीं हाँ समझ में मैं आ रहा मुझे. बताऊंगा आपको. कौन से क्या नाम से आपने डाला है? ये मैंने अभी देखिए सर मैसेज किया ये वाला. प्लस ओके. उसके बाद नेक्स्ट प्लस वी फॉर द, नेक्स्ट प्लस कीजिए ना. मज बोल के सर, मज. हाँ मैं देख रहा हूँ.
उसमें है ना, ये जो छोटा सा ये आ रहा है, वो कोई फॉर्मेटिंग की वजह से या कहीं डेटा, कभी कभी क्या होता है, आपने जब नंबर डालते हैं, आपने देखिए उसको शायद सेंट्रल अलाइन करा है, वो कभी कभी वो ये क्या समझेगा, थोड़े जगह पे वो टेक्स्ट करके समझेगा। तो वो जहाँ पे वो फॉर्मेटिंग का गड़बड़ होता है ना, तो उसको वो आता है। आप फॉर्मेटिंग एक काम करिए, मेरे साथ फोकस करिए। मैथ्स का जो फर्स्ट नंबर है ना 29, वहां पे जाके फॉर्मेटिंग पूरा डिलीट करके सब सेल को सेम फॉर्मेटिंग दीजिए। ये एरर नहीं आना चाहिए। प्लस एड्रेस ये एक बार ट्राई करके देखिए। करके प्लस का तरीका सॉल्यूशन प्लस का ये कुछ। हेलो, यस सर। कोई सवाल फार्मूला को लेके है? फार्मूला जो डाल रहे हैं उसमें कोई कंफ्यूजन है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, बोलिए। वो फर्स्ट तरीका जो आपने बताया था वो D5 से लेकर के H4 तक, हाँ D4 से H4 तक लेने के लिए वो प्लस प्लस करके, वो हाँ, सेकंड मेथड एक बार में पूरा सेलेक्ट कैसे करेंगे इक्वल टू? नहीं, वो आसान जो तरीका है मैं वो बाद में बताता हूँ। पहले है ना, मैं चाहता हूँ कि अभी आपने दो तरीका बताया था ना, दो एड्रेस का भी दो तरीका बताया, एक और आप बताया ना। अच्छा, दो तरीका मैंने बताया था क्या? एक सेकंड जी से, ओके, इसको मैं डिलीट कर देता तो हूँ। सर इक्वल टू किया, और यहाँ पे एक तो एक तरीका ये है कि अगर आपको सेल का एड्रेस मालूम है तो आप खुद टाइप करेंगे D4, ठीक है, और उसके बाद प्लस E4 प्लस F4 प्लस G4 प्लस H4 एंटर कर देंगे तो वो भी चलेगा। आसान तरीका एक और है, उसमें क्या है, मैं प्लस एक इक्वल टू साइन डालने के बाद माउस पॉइंटर लेके जाके आप मैं फर्स्ट को क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आपके कीबोर्ड में ले लेगा कि D4। आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस प्लस साइंस प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस हिस्ट्री, ऐसा करेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। वो भी एक तरीकेकार है। मैं आपको और आसान तरीका भी बता देता हूं, अगर ये आप लोगों को अगर समझ में आ गया है तो आप मेरे साथ फोकस करिए। फॉर्मूला के साथ साथ देयर इज समथिंग कॉल्ड फंक्शंस। फंक्शन क्या है? वो हार्ड फार्मूला को वो खुद एक्सेल बना के आपको दिया है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? टोटल मुझे समझिए कि D4 से लेके H4 तक जितना भी नंबर आते हैं उसको मुझे ऐड करना है, ठीक है। दैट इज माय टारगेट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एवरी टाइम जब भी आपको फंक्शन डालना है, जब भी आपको फार्मूला डालना है, तो इक्वल टू साइन डालेंगे आप। उसके बाद एक फंक्शन है, उसका नाम है सम, SUM। सम करेंगे और ब्रैकेट ओपन करिए। ये जो राउंड वाला ब्रैकेट रहता है ना, उसको ओपन करने के बाद आप फोकस विथ मी वेरी नाइसली। मैं 45 से लेके अपना माउस खींच के हिस्ट्री तक छोड़ देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसने रेंज ले लिया। उसके बाद जो ब्रैकेट ओपन करे हैं उसको क्लोज कर दीजिए, प्रेस एंटर। अब ऑटोमेटिकली ये डाल दिया। यहाँ पे भी जो है एक ये आ रहा है adjacent cells। हाँ, वो अपडेट फॉर्मूला टू इंक्लूड सेल्स, ये कोई दूसरा सेल्स भी ले करके वो समझ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ का भी सेल लेने के लिए वो सिर्फ ये है। मैं इग्नोर फॉर एरर कर देता हूं तो वो ग्रीन कलर चले जाएगा। अब देखिए, मेरा फार्मूला इक्वल टू साइन, अगर मेरा फार्मूला किधर है करके देखने के लिए मुझे मैं क्या करूं, यहाँ पे
focus with me. You see here, दिस इज द फार्मूला बार. आप जो भी फार्मूला टाइप करेंगे वो सेल में जाएंगे तो उसका फार्मूला यहाँ पे दिखाएगा. मैं जो एरो डाल के दिखाया हूँ वहां पे, ये एरिया में आपको फार्मूला जब भी चेंज करना है तो ये एरिया में आके आप फार्मूला को कभी भी एडिट कर सकते हैं. मैं एक और बार आपको दिखाऊंगा कि फंक्शंस कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं. सबसे पहले तो आपको शुरुआत ही इक्वल टू साइन से करना है. उसके बाद सिंस आई वांट टू डू द सम, तो सम करके लिखूंगा मैं. लेकिन सम क्या करना है करके उसको ऑर्डर देने के लिए आपको रेंज बताना पड़ेगा उसको के फ्रॉम .1 टू .2. तो रेंज ऑलवेज रेंज है ना, इसको राउंड ब्रैकेट शुरू करिए. उसके बाद माउस पॉइंटर लेके शुरू करके यहां तक लेके हिस्ट्री तक छोड़िए और क्लोज करिए. क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर. तो आपको 189 ऑटोमेटिकली सम आ जाएगा. उसके बाद हमेशा के जैसा नीचे जाके इसको अगर ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, इग्नोर एरर करेंगे तो वो चला जाएगा. और देखिए ऑटोमेटिकली इसका सम करके आपको दे देगा. ठीक है. आई होप द पीपल हैव अंडरस्टूड द दिस कॉन्सेप्ट. अगर इस जो लोग इससे पहले हाथ उठाए वो निकाल दीजिए, क्योंकि अब नया अगर सम को लेके अगर सवाल किसी के पास है तो उनसे ले लेंगे हम लोग. शब्बीर अहमद, आप पूछ सकते हैं. जीशान सर खान. सर सर जी. एक्चुअली मुझे पूछना है यास्मीन. हाँ जी. जी पूछिए बहन. हेलो जी. एक्चुअली सर मुझे ये बोलना था कि आप जो प्रैक्टिकल का टाइम देते हैं ना, सेम टाइम हम करते हैं तो आप जो समझाते रहते हैं वो पीछे से सारा निकल जाता है हमारा. तो ये प्रैक्टिकल का टाइम क्लास के बाद में या थोड़ा टाइम देना तो हम कर सके. अब जैसे ही हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप पीछे जो बता रहे हैं वो सारा मिस हो जा रहा है. अच्छा. नहीं देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अगर मैं ये पूरा एकदम ये 1 आवर कंटिन्यू लूं, उसके बाद आपको बोलूं कि आप बाद में करके दिखाइए, आपको सवाल अगर डाउट है तो आप मैं नहीं मिलूंगा आपको. तो उसीलिए मैं चाहता हूं कि बीच तो बीच में फिर जो जी, तो फिर अ, आप ऐसे करें ना, 5 मिनट 10 मिनट 7 मिनट जितना भी आप हमें दे सकते हैं वो दे, फिर उस टाइम पे हम करें. तो इन बिटवीन आप कुछ सिखाए नहीं ना, क्योंकि फिर बीच में जब आप वो बताते हैं वो मिस हो जाता है. मेरा देखो टोटल का मिस हो गया तो मैंने क्या किया, रो सिलेक्ट करके ऑटो सम किया, उसके बाद हाँ में हाँ. ट्रैक डाउन किया टोटल के लिए. अच्छा. पर आपने नहीं जो कभी. फॉर्मूला बताया था वो मेरा मिस हो गया. मैंने अच्छा. सिंपल ऑटो सम कर दिया और उससे टोटल किया. तो नो प्रॉब्लम. मैं इसीलिए अभी एक्चुअली एक मुझे और बार वो दिखा सकता हाँ, हूँ, आप मेरे साथ फोकस करिए. जी फार्मूला सीखने में बहुत मजा आता है. एंटर आप दबाएं, प्रेस करेंगे. जब भी आपको एक फार्मूला एंटर करना है जी तो यू विल स्टार्ट विथ इक्वल टू साइन. ठीक है. उसके बाद मैंने कहा कि एक्सेल ऑलरेडी थोड़े फंक्शंस देता है आपको चंद चीजें करने के लिए. उसमें एक फंक्शन का नाम है सम. उसका नाम, ये सम फंक्शन काम कैसा करता है. सम आपको टाइप करने के बाद इसको ब्रैकेट के अंदर कहां से कहां तक सम करना है आपको बताना पड़ेगा उसको. तो मैं शिफ्ट पकड़ के ब्रैकेट ओपन कर लिया. जी उसके बाद माउस पॉइंटर लेके आप मैथ्स सेल से शुरू करके जो मार्क्स है पहला स्टूडेंट का, मैथ्स से शुरू करके आप हिस्ट्री तक खींच के ड्रैग करिए और छोड़ दीजिए. तो आप वो फार्मूला देखिए उसने क्या किया. D4-H4 का मतलब ये है कि ये रेंज में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सम हाँ, कर देना. ठीक है. वो रो और लेकिन कॉलम सिलेक्ट करना है. ओके नहीं नहीं, अब जो मैं दिखा रहा हूँ वैसा ही फॉलो करना है, दूसरा कुछ जी एक्स्ट्रा जी नहीं करना है. एंटर दबाने से पहले डोंट फॉरगेट टू क्लोज द ब्रैकेट. ठीक है. ओके अगर आप ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे तो ये आपका फार्मूला एरर देगा. तो ओके ब्रैकेट क्लोज कर दिया और प्रेस एंटर. इट विल शो हम्म, यू द भाई दिस वाला थिंग. में ओ मैं ओके आपको ओके इसका सिंटैक्स भी बताते चलूं. नो बॉर्डर. भेज रहा हूँ.
चलो भेज दो मेरे को। देखिए, सम का जो सिंटैक्स बोलते हैं, सिंटैक्स का मतलब ये है कि इस ये जो रेंज रहता है, सम शुरू करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद रेंज, जो भी रेंज है वो देंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे। तो ये जो है जो सम जो काम करता है उसका तरीकेकार ऐसा है। और इसको ड्रैग करके नीचे छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिल कर देगा। और कोई सादी का आप सवाल कर सकते हैं। इसके सर वो अभी हमारे फॉर्मूला बार में वो नहीं आ रहा है एड्रेस लिखा हुआ, आप जो बताए वो कैसे आएगा? अभी मैंने व्हाट्सएप पे इसको भेजा है ग्रुप में सर। ओके, मैं देख लेता हूँ एक बार। आपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है क्या? आप कहाँ पे डाले हैं? अभी लास्ट जो है ग्रुप में लेडीज विंग में। अच्छा, आप लेडीज विंग में हैं। जी जी। ओके, लास्ट जो है इसमें आपको क्या दिखा रहा है? डेटा रिकवरी। नहीं, आप जो है इसमें क्लिक करिए, क्या बोलते हैं उसको, एक सेल को क्लिक करके इक्वल टू साइन मार के आप शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फार्मूला बार दिखाएगा आपको। नहीं आप सर, कोशिश नहीं करिए। नहीं आ रही है हमारी वो डाटा रिकवरी के ऊपर में लाइन जो है ना वो नहीं आ रही है। ओके, इसका काम करिए, कंट्रोल एस मार के सेव करके एक्सेल एक बार क्लोज कर दीजिए, फिर से उसको ओपन करिए। होपफुली ये जो रिकवरी का ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी, रिकवर तो सर चले गया अभी दूसरे वाले में, हाँ लेकिन वो ऊपर में वो नहीं आ रहा है, वो मतलब फॉर्मूला बार नहीं आ रहा है, वो एफएक्स हाँ, जो ओके ओके। वर्चुअल फार्मूला एफएक्स। बार अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप वीव में जाके है ना, जी जी फार्मूला बार ये जो देखिए, वीव टैब, सबसे पहले तो ये जो वीव टैब मैं जो अनोटेट कर रहा हूँ, वहां जाके ये फार्मूला बार करके जो है ना, जी ये जी जी हाँ। देखिए चेक है या नहीं है करके। अगर वो नहीं है तो नहीं दिखाएगा। ठीक है। हाँ, फॉर्मूला बार चेक नहीं था, जी जी सर, अभी आ हाँ गया। जी, ठीक हाँ। है। ओके सर, थैंक यू ओके वही। जी। और प्लीज जी। Sir, I think you should close और it. सर एक और डाउट था सर, अगर जैसा आप प्लस वाला जो आप जो नॉर्मल जो एडिशन बताया, उसमें हम्म हम एक बार में D4 से अगर D5 विदाउट प्लस हम डाले हुए करेंगे तो वो हमारा सम करेगा कि नहीं करेगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप जो सवाल कर रहे हैं ना, आप देखिए इक्वल टू, आप मैथ्स में D4 डाला और जी जी। डी E4 डाला, ऐसा बोल रहे हैं हम? नहीं नहीं सर, वो लिखना नहीं है मुझे, बस D4 से वो अभी सिलेक्ट किया सेल ना, वो हाँ हाँ, हमारा ओके। सी, यहाँ ऐसे से ऐसे D2 को करेंगे ना, करना है। जी 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 ऐसा सेलेक्ट करके छोड़ देंगे तो वो कुछ जी। और वो समझेगा वो। आपको हाँ। फॉर्मूला डालना है सम, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके बाद खींच के यहाँ पे छोड़ेंगे, ऐसा करेंगे तो आ जाएगा। जी, तो यानी दो तरीका, या तो हम फंक्शन यूज करें सम, नहीं तो प्लस प्लस लिखना ही होगा तभी हाँ, होगा, नहीं तो बिल्कुल एड्रेस का बिल्कुल। हम डालेंगे वो जैसे D4 अगर H4 लिख देंगे तो नहीं आएगा। बिल्कुल। ओके ओके सर, कभी कभी थैंक यू। डायरेक्ट वो मैं आपको, ये जो शीट रहेगा ये अब बहुत लंबा चलेगा, यहाँ पे एवरेज आएगा, बाद में पास फेल आएगा, ग्रेड आएगा, सब करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जी जी वहां पे आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको मैन्युअली सेल का एड्रेस डालना है और कहाँ पे आप ऑटोमेटिक जो अवेलेबल फार्मूला है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हम लोग इंशाल्लाह वन बाय वन देखेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, जजाकल्लाह। और एक भाई ने वो पूछा था, वो जो डॉट क्यों आ रहा है छोटा वाला, वो यहाँ पे जाके इग्नोर एरर करेंगे तो वो निकल जाएगा। ठीक है, इसको पूरा को सेलेक्ट करके इग्नोर एरर, वो निकल जाएगा। ठीक। Sir, और इमाद, सवाल कुछ है तो पूछिए। हम लोग दिस इज गोना बी द लास्ट क्वेश्चन, देन वी विल रैप इट अप। Sir, हम्म in the name column, when we did A to Z, हम्म I think the DOB must also change accordingly, na?
नेम कॉलम में समझा नहीं, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? If at all Ahmad is coming first and Yusuf is coming last, हम्म so even their DOBs must interchange, ना? वो हो जाता है। आप अगर ये करेंगे, फॉर एग्जांपल सी, आई विल टेल यू कि अगर इसको ये इंटरचेंज करेंगे, खान को अगर अकॉर्डिंग टू साइंस या मैथ्स लेंगे तो वो कंटेंट के साथ नीचे जाएगा। वो ओनली O- वन कॉलम नहीं है, वो पूरा डेटा ऊपर नीचे होगा। Okay. नाउ And आई विल one टेल more यू, thing. सी आई विल टेल यू नाउ। आप टोटल में देख के मुझे बोलिए कि सबसे ज्यादा टोटल किसका है। नाम बोलिए स्टूडेंट का। Mm, Kamal Khan. नहीं भाई, यूसुफ जो है 268 लिया है। हाँ, मेरा ऊपर नीचे हो गया है फिर। ओके, नाउ जस्ट फोकस विथ मी। मैं पूरा टेबल को सिलेक्ट किया। नाउ आई वांट टू अरेंज, सबसे ज्यादा टोटल मार्क्स ज्यादा रहता है, आई वांट हिम टू शो फर्स्ट। तो मैं क्या करूंगा, अरेंज कस्टम सॉर्ट, सॉर्ट बाय टोटल, ठीक है, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में सेलेक्ट करूंगा। ओके, तो सी, यूसुफ जो है पहला आ गया, वीरेश खन्ना सेकंड, रोहित थर्ड आ गया। उसका डेटाबेस, डेट ऑफ बर्थ भी अकॉर्डिंगली इट चेंजेस। मेरे पास अहमद का डेट ऑफ बर्थ इज थर्सडे 9th March 1978। हम्म सी मैं अंडू करूंगा। अब देखिए, यूसुफ का डेट ऑफ बर्थ क्या है, मुझे वो बताइए। Wednesday 11th April 2001। Okay, now I will select this. I will sort, custom sort, sort according to total. The largest value should be first and smallest to the last. Okay, देखिए, वो यूसुफ 11th वेडनेसडे वो ऊपर चला गया, isn't जी। it? अगर वो नहीं जाएगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उसको अरेंज करें। डेटा को ऐसा बिना इसके वो नहीं कर सकते। ठीक है, सो नाउ दिस इज योर होमवर्क के आप सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द टोटल मार्क्स आप रीअरेंज करेंगे द स्टूडेंट नेम। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ट्राई टू फाइंड, टोटल हो गया, एवरेज है, और उसके बाद एवरेज है, लेकिन यू वोंट बी एबल टू डू इट। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है रिजल्ट देखेंगे कि ये बंदा पास हुआ फेल हुआ, इसका एवरेज क्या है, और उसके बाद इसका ग्रेड क्या है, वो हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। एंड वी विल डू फर्दर मोर थिंग। फॉर नाउ एज ए होमवर्क, आप इस पूरे शीट को सिस्टमेटिकली आप अरेंज करिए, और डेटा जो है अकॉर्डिंग टू द टोटल फार्मूला वगैरह डालने के बाद आप फार्मूला डाल के रीअरेंज करके सबसे ज्यादा जो मार्क्स लिया है वो स्टूडेंट का नाम पहले आना है, ऐसा अरेंज करके फोटो लेके आप ग्रुप में डालिए। एंड इट शुड बी ऑल क्लीन एंड नीट, ये रहना चाहिए। आई विल check it out individually inshallah. So next class we will continue with the finishing of the whole student mark sheet का जितने भी चीजें आते हैं उसको हम लोग with the more functions, average function, result के लिए एक particular फार्मूला है, ग्रेड के लिए फार्मूला है, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। ओवर टू यू शोएब भाई, अगर कोई सवाल, मैं समझता हूँ टाइम भी हो गया है, वी विल रैप अप हियर। जज़ाकल्लाह खैर। Jazakallah khair. Thanks to Engineer Jafar Sadiq Saab. I would like to ask everyone to just poll your attendance in the group. I will send the poll. And any questions और कोई questions वगैरह रहेंगे तो आप